Hello, sir. My question is, beyond electoral institutional reforms, what plans does Congress have to ensure that vulnerable sections of the society, especially minorities, Dalits, and of course the migrant workers, are aware of their rights and can verify or restore their voter status easily as a party? Yeah, this is the entire purpose of this press conference, that we are bringing to the nation crystal clear proof that the only thing that poor people in this country, the only power poor people in this country have is being stolen from them right in front of their face. Right? That's what we're doing. We've been doing it now for some time. कुमार विक्रांत। राहुल जी, दो बातें बार बार चर्चा का विषय बनती हैं। एक तो ये बार बार बीजेपी की ओर से, चुनाव आयोग की ओर से कहा जाता है कि जब कांग्रेस या विपक्ष चुनाव जीत जाता है तब वो कहता है कि इसमें गड़बड़ी है, धांधली है। सर एक मिनट पूरा कर लेंगे। और जब हार जाते हैं तब वो ये बात कहने लगते हैं, जीत जाते हैं तब कुछ नहीं कहते हैं। और दूसरी बात ये, क्या इसका इलाज वोटिंग मशीन की जगह दोबारा बैलेट पर लौटने से हो पाएगा? जब तक एक बात आपको क्लियरली समझनी होगी, जब तक इलेक्शन कमीशन कॉम्प्रोमाइज्ड है, जब तक वोटर लिस्ट कॉम्प्रोमाइज्ड है, तब तक ना ईवीएम से कुछ होगा ना मैन्युअली होगा। इलेक्शन कमीशन अगर नॉन कॉम्प्रोमाइज्ड है और मैन्युअली किया जाए हो सकता है, बट यहां तो अंपायर ही मतलब दूसरी टीम का है। तो आप वोटर लिस्ट लगाइए, आप मैन्युअली कीजिए, ईवीएम कीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब मैं आपको दिखाया 1 लाख फेक वोटर एक असेंबली में। आपका दूसरा सवाल क्या था? जीत जाते हैं तब कांग्रेस कुछ नहीं बोलती है, हार जाता है तो देखिए ये स्ट्रेटेजिकली किया जाता है। हमने मॉडल दिखाया है। मॉडल को आप जहां यूज करना चाहते हो वहां कर सकते हो। सिंपल सी बात है। तो नैरेटिव तो बनाना पड़ता है ना। पॉइंट ये नहीं है कि बीजेपी जीत रही है, कांग्रेस हार रही है। पॉइंट है कि हियर देयर इज क्लियर प्रूफ, 100% प्रूफ that elections are rigged in India. Not 99%, 100%. So whether who is winning, who is losing, that's a separate question. We are saying that there is the integrity of the election system in India is gone. What has happened in Mahadevapura is the destruction of democracy, and there are the groups of people who are doing it. Tribune, Shemin. I am from Deccan Raj. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനെതിരെ ഗുരുതരമായിട്ടുള്ള ആരോപണങ്ങൾ തെളിവ് നിരത്തിയാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. മഹാരാഷ്ട്രയിൽ വലിയ ക്രമക്കേടുകൾ, വ്യാപക ക്രമക്കേടാണ് നടന്നത്. ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെയും അതിനുശേഷമുള്ള നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലെയും കണക്കുകളിൽ ഗണ്യമായിട്ടുള്ള വർധനവ് വരുന്നു. കന്നി വോട്ടർമാർ അടക്കം വ്യാപകമായ രീതിയിൽ ക്രമക്കേട് നടത്തിയിരിക്കുന്നു. ലക്ഷക്കണക്കിന് വോട്ടുകൾ ഇത്തരത്തിൽ മറിഞ്ഞു എന്നുകൂടി രാഹുൽ ഗാന്ധി ആരോപിക്കുന്നു. BJPക്ക് വേണ്ടി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ കുടപിടിച്ചു എന്നാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവിൻ്റെ ഗുരുതര ആരോപണം. ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം തിരികെ എത്താം.